Hello people and welcome to Shifting Gears. In this video we have with us the Honda WRV. WRV इंडिया की सबसे सक्सेसफुल हैचबैक क्रॉसओवर है and it is based on the Honda Jazz but it has a lot of differences compared to its hatchback sibling. अब इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7.8 लाख रुपीस से लेके 10.3 लाख रुपीस तक। एक शोरूम पेट्रोल टू डीजल वेरिएंट्स का इसका प्राइस अब काफी वाइड है, but the WRV has been selling in very good numbers for Honda Car India and especially Jazz के comparison में Jazz इसकी डोनर कार है, फिर भी the Jazz doesn't sell just as good as the WRV does. Why? क्योंकि इंडिया में लोगों को SUVs बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हैचबैक क्रॉसओवर्स फॉर एग्जांपल Hyundai ने ट्राई की थी विद द i20 Active उन्होंने लॉन्च की थी, Volkswagen had launched the Cross Polo, but both those cars did not really do that great. Of course, the i20 Active did sell in decent numbers जब i20 Active launch हुई थी because the standard i20 was demanding a lot of waiting period. But the WRV on the other hand is just selling good consistently because it is very different to look at compared to the Jazz. सबसे पहले जब आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखते हो, Honda WRV में एक completely different nose है। गाड़ी का फ्रंट एंड डिजाइन काफी प्रोनाउंस्ड है कंपेयर टू द जैज। जस्ट लुक एट हाउ फ्लैटिश द फ्रंट एंड डिजाइन इज। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा मस्कुलर, थोड़ा ज्यादा बोल्ड, थोड़ा ज्यादा प्रेजेंस इसका दिखाई देता है एंड दैट हैज बीन प्लीजिंग द कस्टमर्स who want something on the size and scale of a hatchback which makes it easy to live with but it also looks tough for your daily urban grind. हेडलैम्प क्लस्टर WRV का पूरी तरीके से नया है। इट इज नॉट सिमिलर टू द जैज एट ऑल। LED DRLs भी मिलते हैं आपको इस गाड़ी में, सो इट ऑल्सो एड्स टू दैट लिटिल वाव फैक्टर। वाव RV इसे होंडा बुलाता है एंड द WRV इज क्वाइट अ गुड लुकिंग पैकेज ओवरऑल। फ्रंट एंड पे आपको एक क्रोम एलिमेंट मिलता है, दिस चंकी क्रोम एलिमेंट व्हिच मिंगल्स विद योर हेडलैम्प। हनीकॉम मैश यहाँ पे मिलती है आपको। 4 स्किड प्लेट इफेक्ट मिलती है फ्रंट बम्पर पे। ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग भी मिलती है। प्लास्टिक क्लैडिंग इज ऑल अराउंड ऑन द कार, सो इट मेक्स इट लुक दैट मच मोर रफ रोड फ्रेंडली। और आपको एक कन्वेंशनल फॉग लैम्प भी मिलता है। बम्पर डिजाइन भी Honda Jazz से डिफरेंट है। सो व्हेन यू पार्क द WRV राइट नेक्स्ट टू अ Honda Jazz, similarities from the front end are bare minimum, and that is primarily the reason why Honda has been able to successfully sell this car from their showroom. क्योंकि जब वो इसे बुलाते हैं as a crossover, it has quite a few visual differences. But then those visual differences turn out to be not so much when you look at the side profile of the WRV. जब आप side profile को देखते हो, when you look at the rear quarter panel, the doors, the mirrors, everything reminds you of the Honda Jazz. Of course, body cladding जो है वो differentiate करने की बहुत अच्छी कोशिश करती है and it does mask the jazzy appeal of the car. It still is a Jazz. उसके बाद आपको ये प्लास्टिक रूफ रेल्स भी मिलते हैं। These are purely for aesthetics. इस पे आप लोड कैरी नहीं कर सकते हो, but they make the WRV that much more taller than the Jazz in its overall dimensions. Also, another reason for the higher profile of the WRV are the 16-inch alloy wheels. Alloy wheels dual tone है, काफी decent दिखते हैं and they also give you that raised feeling on the WRV. Overall, dimensions की अगर बात करेंगे तो WRV is different than the Jazz. It is a little longer, it is higher, and also the ground clearance is different. Also, the wheelbase of the WRV is different compared to the Honda Jazz. But still, mechanically, the chassis, the engine, everything is just similar to the Jazz. And there was nothing wrong with the Jazz. The Jazz is a fantastic car overall, and hence the WRV again carries forward all its virtues and becomes a very good car for your family, for your urban commute, and a car which looks tough. Then when you come to the rear profile, you can notice that the tail section also has been reprofiled completely. Tailgate देखिए अलग है, यहाँ पे आपको एक split tail lamp मिलता है WRV में. It looks decent. LEDs होते हैं तो ज्यादा बेटर दिखता, but maybe Honda इसे अपने facelift के साथ, WRV facelift के साथ LED tail lamp दे सकते हैं इस गाड़ी में. Jazz में यहाँ पे आपको red reflectors मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक black applique मिलता है, and then you also have a chunky chrome garnish, a number plate garnish, and you also get 4 skid plate effects at the rear also. So this completes the design of the WRV. You do not get a spoiler. A spoiler would have added that much more extra appeal to the car, that much more flair to the overall design, because I am not a fan of the rear profile of the WRV. I think that the Jazz from the rear end looks much better. The WRV is okay, but then looks are subjective. It all comes down to personal taste.
Especially the front end is what makes the WRV stand out, look good, and I really like the overall proportions of the car. अब जब आप इसे conventional compact SUVs के साथ compare करोगे, the WRV doesn't feel that tall, butch, muscular, typical SUV like. But then, if your need is to drive the car within the city and sometimes drive around some rocky terrain, this car is not going to leave you unhappy. Rather, you will be very pleased with the Honda WRV. Now let me show you the interiors of the car, how good it is, how different it is compared to the Jazz, what is nice, what is not so nice. When you step inside the WRV, things are reminiscent of the Jazz. Of course they will be, it is based on the Jazz. So the dashboard layout is completely identical, there is no change at all. इस गाड़ी में आपको steering wheel adjustment rake and reach के लिए मिलती है, which on the Jazz is only a tilt steering wheel, not telescopic. Also इसमें जो आपको instrument cluster मिलता है, a tachometer to your left, a speedometer in the center and a MID to your right. It is identical to the Jazz. Color में भी कोई भी differences नहीं मिलते हैं. यहाँ पे एक eco indicator है which stays green when you are driving in fuel efficient mode and turns blue when you are pushing the throttle a little more to get more power. This is a new touchscreen infotainment system. It is good to use, but it is not really that responsive. I think this could have been better. अभी ये ऑन नहीं किया है हमने because the readability wouldn't be that great anyway because we are under top sun at the moment. But then what adds that wow element in the WRV is this electric sunroof. इस गाड़ी में आपको sunroof मिलता है, Jazz में आपको sunroof नहीं मिलता है. Also the floor console on the WRV is different compared to the Jazz. यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है, अंदर काफी डिसेंट, काफी अच्छी स्टोरेज स्पेस है. यहाँ पे भी आपको एक पावर आउटपुट और USB चार्जिंग पॉइंट मिलता है. There is another USB charging point here, a power output and also an HDMI output because the touchscreen infotainment system also supports video playback. But apart from this, there is nothing really different in the interiors of the Honda WRV. There is an additional sunroof and after the Jazz facelift, things are pretty much similar in both the cars except for a minor changes in detailing here and there. इसमें आपको एक push button start मिलता है. You have all the controls on the steering wheel, audio controls, you have cruise control buttons also, and the WRV will leave you as a happy customer. इसका जो gear selector है, the gear shifter जो है काफी अच्छा है. It falls very nicely in your hand. The gear knob is very nice. Leather wrapped gear knob नहीं है. Leather wrapped steering wheel भी नहीं है. On the Jazz, you get a leather-wrapped steering wheel and a leather-wrapped gear knob. Now, why this is done? Maybe to cut costs, but that's what it is. You can do nothing about it. The seats on the WRV are very nice. The lumbar support especially, brilliant. Honda's man maximum, machine minimum philosophy has always worked in favor of offering maximum comfort to the passengers inside, and the WRV, big thumbs up in that department. Now let's check out the back seat, how good it is. The Jazz is a big comfortable hatchback by itself and hence the WRV is also a big comfortable crossover. It is a hatchback on still, but let's call it a crossover. The seat is adjusted to my seat height. मैं 5 feet 8 inches in height हूँ, बैक सीट में बैठा हूँ और देखिए मेरे लिए काफी अच्छा लेग रूम अवेलेबल है. There is very decent knee clearance over here. फुट रूम भी काफी अच्छा है. I can sit very comfortably. ये एरिया जो है थोड़ा रेज्ड है तो आपके पैर ऐसे रिलैक्स्ड वे में यहाँ पे पोजीशन होते हैं. सो यू स्टे वेरी कंफर्टेबल इन द WRV. सीट बैक भी काफी अच्छा है. बट देन द नेगेटिव इज देयर इज नो हेड रिस्ट्रेंट. देयर इज नो नेक रिस्ट्रेंट. हेडरेस्ट नहीं दिया गया है विच इज एडजस्टेबल. फिक्स्ड है ये सीट पे एंड दे आर अ बिट टू सॉफ्ट. तो ये देखिए कितने आसानी से ये स्क्वीज हो जाते हैं. एंड देन दैट शुड हैव बीन ऑफर्ड एट दिस प्राइस. स्पेशली ये गाड़ी लगभग 13 लाख की ऑन रोड होगी, द डीजल टॉप एंड वेरिएंट, एंड फॉर दैट प्राइस यू नीड दिस. पीछे आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है आपको, पीछे आपको रेयर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं. ओवरऑल कंफर्ट के मामले में इट इज नॉट बैड. हेडरूम इज डिसेंट. अगर आप 6 फीट से ज्यादा टॉल हो तो थोड़ा ये टाइट स्क्वीज आपको फील होगा. ऑल्सो फ्रंट सीट में आपको स्पेशली ये ज्यादा फील होगा. लिमिटेड हेडरूम क्योंकि ये सनरूफ का जो कंपोनेंट है उसकी वजह से रूफ लाइनर थोड़ा नीचे आया है. सो दैट विल मेक यू लिटिल अनकंफर्टेबल इफ यू आर ऑन द टॉलर साइड. But apart from that, WRV overall is a comfortable car. गाड़ी में ग्लास एरिया काफी चौड़े हैं, बड़े हैं and it offers a lot of light inside. भले ही डार्क ब्लैक इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी में, the cabin does not feel claustrophobic at all. And I think that the WRV is a very good family car. 363 liters of boot space, the WRV can pack a lot of stuff.
Look at this. We have riding gear for 2 riders, backpacks, a leather suit over here, and there is still room for more luggage in this car. This luggage space in the WRV is much more than a few compact sedans and also compact SUVs. Honda's smart packaging shows over here, and it shouts out that this is going to be a good long drive vehicle for you because it can carry that much more luggage, especially if you go with 5 people on board. This is going to be a good car for you. So overall, these are the reasons which make the WRV India's most loved crossover. इतनी अच्छी बिकने वाली crossover इंडिया में हमने अभी तक नहीं देखी थी. It is not really a different car. It is a Jazz. You cannot deny that fact. It is based on the Jazz. It even shows it from the side profile especially. But then people are loving the WRV. The WRV will also get a facelift in due course of time, and of course that would give it a boost in the sales department. कमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में. क्या आप WRV कंसिडर कर रहे हो? डू यू थिंक दिस कार इज गुड इनफ फॉर योर फैमिली? क्या आपको इसकी क्रॉसओवर डिजाइन पसंद आती है या आपको एक टिपिकल कॉम्पैक्ट SUV बोल्ड एंड बुच डिजाइन ही चाहिए आपके गराज में? टिल नेक्स्ट टाइम, subscribe to the Shifting Gears channel. I will see you in the comment section down below, and goodbye.